start asking your questions. This is a special class. This is a class which we dedicate on ITA recognition and growing a travel company, as it is very well informed to all of you. So this is the class in which we would be answering all your questions related to ITA recognition and anything you want to ask about growing your travel company. That also I would be happy to answer. Right. So without wasting any time, I can start asking questions. Please go ahead. सर मैंने अपना आईटा जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लिया है और अपना बैंक अकाउंट भी खुलवा दिया है. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है वो थोड़ा गाइड कर दीजिए. बड़ा अच्छा सवाल किया आपने. देखिए, let me answer this from the beginning that when you want to apply for ITA recognition, then there are few things which are mandatory. One is that your company must be registered, right? It can be proprietorship, it can be partnership, it can be private limited, it can be anything. One thing which is there. Second, your GST registration. You must have the GST registration. And third are the certificates. The certificates which proves that you know air ticketing, right? So these things, if you are having, then you are eligible to apply for the visa. Let me say the same thing in Hindi. जब आप ITA अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास सबसे पहले तो आपकी जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड हो. वो प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन हो सकता है, वो प्राइवेट लिमिटेड हो सकता है, वो वन पर्सन कंपनी हो सकता है, वो LLP हो सकता है, LLC हो सकता है. ठीक है, यहाँ पर मैं ये क्लियर कर देना चाहूंगा कि इफ इट इज वन पर्सन कंपनी, अगर ये वन पर्सन कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप है, देन वी कैन अप्लाई ITA ऑन द बेसिस ऑफ अ सिंगल सर्टिफिकेट. ठीक है, आप ही की क्लास के अंदर एग्जाम्पल है, आप सावन तुमेन के साथ पढ़ते हो ना. सावन तुमने ITA स्टैंडर्ड ले लिया है, जानते होगे आप, है ना. तो उसने सिंगल पर्सन प्रोप्राइटरशिप के बेसिस पे लिया. कितने लोग हैं जिन्हों को ये लगता है कि ITA स्टैंडर्ड तो नहीं मिल सकता होगा. और ये भी मैं यहाँ पर बता देना चाहूंगा कि इट इज नॉट रिटन ऑन ITA's वेबसाइट. ITA की वेबसाइट पर ये चीज अभी भी नहीं लिखी गई है कि आप सिंगल सर्टिफिकेट, सिंगल पर्सन के सर्टिफिकेट के बेसिस पर ले सकते हैं. ये वहां पर अभी भी नहीं लिखा गया है. ठीक है, तो पर आपके सामने है, आपकी क्लास में आपके साथ पढ़ता है. ठीक है, आप जानते हो, आप उससे पूछ सकते हो, क्लास में भी उसने जरूर बताया होगा. ठीक है, सो इफ इट इज अ सिंगल पर्सन कंपनी, इफ इट इज a company which is registered as proprietorship, then we can apply on the basis of a single person certificate, right? If it is a partnership, if it is a private limited, or then there are more people in the company, then there should be two people having the legitimate certificates, right? That is why we have exam today. इसीलिए ही आज एग्जाम है 3 बजे. जिन्हों का एग्जाम है सबको लॉगिन आईडीज मिल चुके हैं. ठीक है, आपके सैंपल पेपर मिल चुके हैं और आप लोग उसकी हेल्प से आराम से एग्जाम दे सकते हैं. राइट, आई होप दिस आंसर योर क्वेश्चन. फिर से बता रहा हूं मैं कि आपको क्या कहते हैं, आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट चाहिए जैसे भी आपने रजिस्टर किया है. ठीक है, आपको सर्टिफिकेट चाहिए जो कि हम दे रहे हैं एग्जाम के बेसिस पर. ठीक है, जो कि एग्जाम पास करना आसान है, आप अपनी मेहनत से उसको पास करते हैं. ठीक है, और तीसरा आप GST registration. GST registration in India is, ठीक है, ITA ने नया क्या कहते हैं रेक्रेडिशन स्टार्ट कर दिया, जो कि पहली बार हम इस क्लास के अंदर बता रहे हैं. पिछले महीने तक ये नहीं था. ठीक है, a new accreditation format has also come from ITA. जो नया accreditation format है वो है यूरोजोन. जो लोग यूरोप के अंदर काम कर रहे हैं और वो पूरे के पूरे यूरोप के लिए they want to take one ITA number. So ITA has recently, only now, has started ITA recognition Eurozone, right?
दैट इज कॉल्ड आईटा रिकॉग्निशन यूरोजोन, राइट। तो पहले सिर्फ हमारे पास 3 ही ऑप्शंस हुआ करती थी आईटा रिकॉग्निशन की, आईटा गो लाइट, आईटा गो स्टैंडर्ड, आईटा गो ग्लोबल। अब 4 है, ठीक है। तो 4 है, तो चौथी जो ऐड हुई है वो है यूरोजोन। तो वो यूरोप की कंपनीज के लिए है। हम लोगों के लिए जो यूरोप, जो एशिया के अंदर है, उन्हों के लिए ये उतनी यूजफुल नहीं है। यूजफुल तो खैर सबके लिए है अगर कोई उसको अच्छे से समझेगा। सो पीपल हु वांट टू गो फॉर दैट, ऑब्वियसली द प्रोसेस इज सेम, वही हमारे सर्टिफिकेट के बेसिस के ऊपर वो भी होगा। एंड ऑब्वियसली इट इज मोर बेनिफिशियल उन लोगों के लिए कि जो, जैसे मान लीजिए पहले कोई बुल्गारिया के अंदर अपनी कंपनी रजिस्टर कर रहा था, तो बुल्गारिया की टिकटिंग का कंट्रोल लेता था और बाकियों के लिए उसको दिक्कत आती थी। तो अब पूरे के पूरे यूरोप को उन्होंने एक ही के अंदर डाल दिया है। सो दैट इज व्हाट हैज रिसेंटली स्टार्टेड, जो आज हम आपको बता रहे हैं। और बताइए, और कोई सवाल है? 1 मिनट सबका मैं टाइम, सबसे पहले मैं साहिल का सवाल लूंगा और उससे पहले मैं प्रतिभा डे, उमंग पोदार, अब्राहिम, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने कैमराज ऑन कर लीजिए, अदरवाइज आई वुड हैव नो ऑप्शन बट टू रिमूव यू फ्रॉम द क्लास। आई रिक्वेस्ट यू टू टर्न योर कैमराज ऑन, अदरवाइज आई वुड हैव नो ऑप्शन बट टू रिमूव यू फ्रॉम द क्लास। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि अपना कैमरा ऑन कर लें, अदरवाइज मुझे आपको क्लास से रिमूव करना ही होगा, ठीक है। पूछिए साहिल, क्या सवाल है? और जो मेरे पीछे साथ बैठे हैं क्लास के अंदर यहाँ पर, आप लोगों को ये इंतजार नहीं करना कि मैं पूछूंगा कि क्या सवाल है। आप लोग थोड़ी बुलंद आवाज में अपना सवाल पूछें, मैं आपको जवाब दूंगा, ठीक है। बोलिए साहिल, क्या सवाल है? Thank you for having this class, sir. But basically, when you say that two certificates are required in two different people name, yeah. राइट। So two different person have to write the exam basically because, like in my company, it's a limited liability partnership. So my partner needs to write the exam, or someone else can be. A very good question. Now please understand that when we are saying two people, okay, then obviously there has to be two different people, okay. But here I would like to make it clear that if I am the owner of the company, if I am one of the director of a LLP, I am one of the partner of LLP, and there is another person who is also the partner of LLP, हम दोनों ही क्या कहते हैं, अपना सर्टिफिकेट नहीं लेते, ठीक है। मान लेते हैं कि एक पार्टनर का नाम है मयंक और दूसरे का नाम है मनीतोष, ठीक है। ना मयंक के पास सर्टिफिकेट है, ना मनीतोष के पास सर्टिफिकेट है। इनों के पास एक सुनीता है, एक अनीता है। सुनीता और अनीता इनकी एम्प्लॉइज हैं, ठीक है। सुनीता और अनीता के सर्टिफिकेट के बेसिस पर ये अपनी कंपनी का आइटा ले लेते हैं। So this is not mandatory that the certificate has to be on the name of the owner. Okay? They can even take the certificate on the name of their partners. मान लीजिए कि अपनी वाइफ्स के नाम पर ले लें, या अपने बच्चों के नाम पर ले लें जो 18 साल से ऊपर हों, या अपने पेरेंट्स के नाम पर ले लें, ठीक है। बट हाँ, 2 अलग लोगों के नाम पर सर्टिफिकेट होने जरूरी है। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। सर एक छोटी सी क्वेरी है कि जब 2 अलग लोगों के, मतलब 2 अलग लोगों को टेस्ट देना पड़ेगा, मतलब जो पूछना मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे टीम मेंबर को सीख के करना पड़ेगा। दैट्स वेयर माय क्वेश्चन इज। देखिए, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आज एग्जाम है, ठीक है। एग्जाम का लॉगिन स्टूडेंट्स को मिल चुका है, ठीक है। 2 घंटे का एग्जाम होता है, राइट। यूजली 20 मिनट के अंदर लोग कर लेते हैं, ठीक है। इस एग्जाम की ये डिसएडवांटेज है, और जितना हम ओपनली इस बात को बोल रहे हैं ना, ये डिसएडवांटेज जो देने वालों के लिए एडवांटेज होती है एक्चुअली, ठीक है। ये डिसएडवांटेज और ये एडवांटेज खत्म हो जाएगी जितना ज्यादा इस चीज के बारे में बात की जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। ऑब्वियसली उसका वो सॉल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है। जब कोई भी एग्जाम दे रहा है, इसको कोई कैमरा मॉनिटर ही नहीं कर रहा, देख रहे हैं आप, नो कैमरा इज मॉनिटरिंग इट। मैंने लॉग इन किया, मैंने एग्जाम दे दिया, ठीक है। एक मेरे पास लॉग इन है, 2 लोगों का मैंने देना है, 20 मिनट में मैंने एग्जाम खत्म कर दिया, मैं लॉग आउट करके दूसरे का दे रहा हूं, कोई मॉनिटर ही नहीं कर रहा है, जो कि एक गलत बात है, ठीक है। अब इस बात से हमें क्या समझ में आता है? इस बात से हमें यह समझ में आता है कि आईटा भी तो खाना पूछ नहीं कर रहा है। आईटा भी कह रहा है कि भाई जहां से मर्जी सर्टिफिकेट उठाकर ले आओ, मेरे को आप पैसे दे दो, आप मुझे पैसे दे दोगे, मैं आपको एक नंबर दे दूंगा और
ये नंबर मिलने के बाद आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी, आप अपने घर के बाहर अपने गार्डन में खोदोगे तो 100 करोड़ रुपए निकल आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ये मैं साफ साफ बताना चाहता हूं आप लोगों को। जो लोग भी ये सोचते हैं ना कि हम आइटा ले लेंगे और द वर्ल्ड वुड चेंज, कि हाँ अब हमारी सारी की सारी टिकटें सस्ती हो जाएंगी, सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आइटा की कोई वैल्यू नहीं है और आप आइटा ना लें, आइटा आपको तब भी लेना है। ठीक है, क्योंकि बिना आइटा लिए जो वो 100 करोड़ रुपए निकलने हैं वो कभी भी नहीं निकल सकते। अभी तो इंस्टेंटली तो नहीं निकलेंगे, पर इवेंचुअली जो निकलेंगे वो धीरे धीरे जरूर निकलेंगे कभी ना कभी। ठीक है, सो वंस अ पर्सन हैज टेकन एन आइटा देन द पर्सन हैज टू रिमेन कंसिस्टेंट, कैन इशू द टिकट। जब तक आपने टिकट इशू करनी शुरू नहीं की, एंड देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू टेक अराउंड 6 months to an year, and then the things would improve a lot, then the things are going to improve considerably। ठीक है, तो क्या कहते हैं, आइटा जरूर लीजिए। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, आई थिंक आई वाज ड्रिवन एंड चेंज द टॉपिक। और कोई सवाल किसी का? एनी अदर क्वेश्चन एनीवन वांट टू आस्क? कोई और कुछ पूछना चाहे? सर मेरा एक क्वेश्चन है। एक सेकेंड एक सेकेंड, आइटा और ओके, यहाँ पर सवाल है, बड़ा बेसिक सवाल है, हमारे स्टूडेंट है। ठीक है, आइटा, IATA और ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? ठीक है, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि अगर आपके पास ICAO की ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी रिकॉग्निशन होगी तो आप टिकट इशू नहीं कर सकते हो। ले लो, आप जो मर्जी कर लो, आपको कोई उससे टिकट इशू करने का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आइटा की रिकॉग्निशन है तो आप टिकट इशू कर सकते। किसी भी ट्रैवल कंपनी को अगर अपनी कंपनी के नाम पर टिकट इशू करनी है, then for them it is mandatory to have ITA recognition. Okay, an association which is organizing and managing the aviation, that is international civil aviation। civil aviation का मतलब है कि जिसके अंदर नॉर्मल पैसेंजर्स, हम जैसे लोग हवाई जहाज में बैठते हैं, और जो हवाई जहाज की कंपनियां हैं, जो एयरलाइंस हैं, दे आर नॉट फूलिंग पीपल, दे आर नॉट एबल टू दैट फूल देम। सो दैट इज व्हाट is ICAO doing। Okay, that was the job of आइटा earlier। ठीक है, यही काम आइटा का पहले हुआ करता था, जो कि आइटा ने फिर प्राइवेटाइज हो गया, प्राइवेटाइज कह लीजिए, कॉमर्शियलाइज हो गया। एंड बिकॉज ऑफ दैट there are other associations which are taking care of such things। and in regards to ITA recognition, in regards to issuing the air ticket, in regards to the recognition of a travel company, the only body which has a value is ITA। देखो, जो आप बात कर रहे हो ना, बड़ा अच्छा सवाल है, पूछना भी चाहिए। मैं 1000 एसोसिएशन गिनवा सकता हूँ। ठीक है, एक नहीं, 1000 एसोसिएशन में गिनवा सकता हूँ। बच्चों को पढ़ाते हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिसके अंदर एक एक साल में पढ़ा सकता हूँ, सिर्फ थ्योरी पढ़ाता रहा। ठीक है, ये एसोसिएशन की फुल फॉर्म याद करो, इसकी करो, फाटा की करो, इसकी बहुत सारी है। ठीक है, पर रियलिटी में निकलेगा क्या? कुछ भी। ठीक है, बट आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑल दी एसोसिएशन आर इम्पोर्टेंट। जो इन्हों के मेजर रूल्स हैं उन्हों को कंट्रोल करने के लिए, कि कोई कंट्री दूसरी कंट्री को तंग नहीं कर रही है, एंड एयरलाइन इज नॉट क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर अदर एयरलाइन, so that is why these association exist। ठीक है, बट फॉर अ ट्रैवल एजेंट द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड इफेक्टिव एसोसिएशन इज आइटा, इसीलिए हम आइटा की ज्यादा बात करते हैं। ठीक है, एनीथिंग एल्स एनीवन वुड लाइक टू आस्क? और कोई सवाल? यस मन। जी सर। ठीक, सर मेरा मेरा पूरा डॉक्यूमेंट्स अभी रेडी हो गया, तो मैं अभी जैसा GST निकाल दिया और जो बाकी जितना प्रिपरेशन हो गया, अभी मैं अप्लाई कर सकता हूँ आइटा सर? यू हैव रिसीव्ड द सर्टिफिकेट्स फ्रॉम अस? यस। सर्टिफिकेट मिल गया आपको दोनों के दोनों, है ना? ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे। बाकी कई हमारे स्टूडेंट हैं जो बड़े मतलब सर रहते हैं कि भाई पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। सो यू वर गिवन अ सैंपल पेपर, यू आर गिवन सम नोट्स आल्सो। ठीक है, बट ऑन द बेसिस ऑफ द सैंपल पेपर आप एग्जाम दे पाए और पास हो गए, ऐसे ही है। ठीक है, तो आप सब लोग भी, बाकी भी हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैं ये आप सब लोगों को बता रहा हूँ कि जो प्रोसेस हम बता रहे हैं उसको फॉलो करें डिलीजेंटली, आप लोग पास हो जाएंगे। ठीक है, जब आपके पास सर्टिफिकेट आ गए, इसी सवाल से हमने शुरू किया था। ठीक है, GST रजिस्ट्रेशन है, कंपनी फॉर्मेशन का प्रूफ आपके पास है,
you have got your certificates. Go ahead, apply ITA. And what are you waiting for? तो आप बिल्कुल जाइए, अपना प्रोसेस समझाया हुआ है अच्छी तरह से, आज भी मैंने लॉगिन करके रखा हुआ है। आप लोग कहोगे दिखा दो, हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं जिसके अंदर हमने दिखाया हुआ है। तो यू कैन ऑब्वियसली अप्लाई इट। जब आप अप्लाई कर रहे हैं, ये क्लास हर महीने क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है कि जो लोग अप्लाई कर रहे हैं दे आर फेसिंग प्रॉब्लम। आपने मेरे ख्याल से 4 महीने पहले कोर्स किया था नूरुल, ठीक है? जी सर। आप क्लास में आ सकते हो। जो लोग आज क्लास में हैं वो 1 साल के बाद भी इस क्लास में आना चाहेंगे, किस क्लास में आ सकते हैं। किस लिए? इसीलिए कि इवन इफ यू आर नॉट डूइंग राइट नाउ, यू मे डू इट लेटर ऑन, यू कैन कम एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, राइट? तो आप प्लीज स्टार्ट कीजिए। फिर भी उसके बावजूद भी अगर कहीं पे दिक्कत आती है, देन वी आर ऑलवेज अवेलेबल। आप व्हाट्सएप पे भी सवाल पूछेंगे तो हम उसका जवाब देंगे, ठीक है? बोलो बोलो अंचित, बोलो क्या सवाल है? Thank you, आईटा जीएसटी रजिस्ट्रेशन और कंपनी फॉर्मेशन दोनों अलग अलग चीजें आप बार बार कह रहे हो देखो, कि जब प्रोप्राइटरशिप होती है ना, हाँ जब प्रोप्राइटरशिप है तो जीएसटी ही आपकी कंपनी फॉर्मेशन का प्रूफ बनती है, ठीक है? हाँ। और आपके आईडी प्रूफ, ओके? पर जब ये प्रोप्राइटरशिप नहीं है, when it is a partnership, when it is LLC, LLP, private limited, then obviously there is another document which proves that it is a private limited company, it is a LLP and LLC. So that is a requirement, and they also need to put GST if they are in India, right? So that मैंने प्रोप्राइटर करी। आपको अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लगाना है और आपको अपना पासपोर्ट लगा देनी, ठीक है? या आधार कार्ड लगा देनी, ठीक है? क्लियर? Sir, one thing. Yes, please. All three Go Light, Go Standard, and Go Global. I don't think these all three offer all the airlines. And if they don't, if we want to get a specific airline, what are the parameters that airlines look for to provide you their services or? Very good question. This is called a question, right? Moving forward. Now understand. The question is that what is the difference in ITA Go Light, Go Standard, and Go Global? Are they allowing us to issue the air tickets of all the airlines, right? So let me first give you an answer which would leave you confused, okay? Yes, irrespective of you are taking ITA Go Light, Go Global, or Go Standard, you can issue air tickets of any airline, right? But here we have to understand that when you have Go Light, you have limited number of airlines which are available on your system. When you have Go Standard, then there are other different limited number of airlines which are available on your system. And when you are having Go Global, then there are around 300 airlines which are available on your system. Okay. So the availability of the airlines which are visible on your system, that makes a lot of difference, right? What do we mean by that? We mean by that is when your system is not showing you the airlines, then how would you issue that? For issuing it, you can get them added. Like I said, irrespective of you have ITA Go Light, Go Standard, or Go Global. If there is a particular airline which is not available on Go Light and I want to issue only those air tickets, the air tickets of only that particular airline, then I can get that added. Okay. And for getting that added, the first step, the first requirement is ITA recognition. Right? So- I hope this answers your question. So they don't check that you this background, you have issued these many PNRs of our airlines in the past 1 year, no parameters as such. They can add anyhow, right? You can definitely, there are such parameters, but first of all, you have to understand the job of checking your parameters are done by ITA and GDS. First of all, when you are applying ITA, then ITA is taking a lot of documents from you, right? They are checking your background. They are taking an hefty amount from you, right? Why this hefty amount is going? Are they giving you something out of it? Nothing. This amount is taken just to see that how serious are you? Are you really a travel agent who can put such kind of an amount for starting a business, or someone just want to put a tag that I'm a travel agent because there is no expense, right?
Second part, when you would have an ITA and you would go for GDS, then GDS would also do your background check. They would also like to say that give your company detail, give your address detail, we can come and see. So actually, the representatives of ITA who should be doing the physical check to travel companies are GDS. Okay. But when a GDS, like you come to from a reference, okay. So there was no need for me to verify, right? Oh, there is a reference, an industry colleague, I trust, he trusts. Let's go ahead. Dipesh, ठीक से बैठ जाओ, क्लास से निकाल दूंगा मैं आपको. ठीक है, sit properly. Okay. And Buchi Babu, आप अपना कैमरा ऑन कर लें, otherwise I'm going to remove you from the class. This is the last warning. Okay. Now, so similarly, these GDS, they are many times they would just say that we are going to come and see your office physically, but they don't come. This is also very common because we criticize this and we mention this in our classes. So sometimes these GDS people have started coming for it. Okay. Because they are also answerable, right? Now, the third part, okay, like you asked that can anyone take it? When you are an ITA and you have issued significant number of air tickets, then obviously you would be able to get a particular airline added without paying any money. Otherwise, the airline would say, pay us an amount. Give us a bank guarantee, right? A bank guarantee is not going in their pocket. They are also saying the same thing that, oh, you are ITA Go Light, which is very, very cheap. Maybe you spend around 1 lakh or 2 lakh rupees and you can say you are ITA. But we don't trust someone who has only spent 1 lakh or 2 lakh. Now you want our capping, you want to sell our tickets, then give us 2 lakh rupees as bank guarantee and we'll give you the ticketing right. Right? Now let me tell you, it is not necessary. It is not at all necessary that all the airlines would ask you to pay for it. It entirely depends that how you communicate and your reputation in the industry. Right? You're able to understand. तो क्या कहते हैं, जैसे कि एक्सपीरियंस आप लोगों के क्लास में ही बैठे हैं, कितने लोग हैं जिनों से हम कई बार बिल्कुल बात ही नहीं करते, कई हैं बताएंगे कि बात ही नहीं करते हैं हमारे से, तो कई लोग हैं जिनसे हमने आधा घंटा भी बात किया था जस्ट बिकॉज कि भाई एक इंडस्ट्री रेफरेंस भी है. ठीक है, सो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. तो कहने का मतलब क्या है, इवन इफ वी स्टार्ट फ्रॉम विद अ स्मॉल expense with Go Light, whatever airlines are available on Go Light, sell them, sell some air tickets, and on the basis of that, apply for taking the ticketing right of other airlines. A smart travel agent who is just starting up would not go for an expensive module of ITA, would prove on the basis of ITA Go Light. We have students only on the basis of ITA Go Light. They are able to add and issue air tickets of more than 130 airlines, and they are still maintaining ITA Go Light. Able to understand that? Many people, they think that, okay, if we would take ITA Go Standard, we would have a lot of airlines. The number of airlines are more or less same in ITA Go Light and Go Standard. But the amount required to be invested is, there is a huge difference in that. ठीक है, तो ऐसा मत समझिए आप लोग, ये आप लोगों की मेहनत के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा, आप लोगों की रेपुटेशन पे, आप कितनी टिकट इश्यू कर रहे हो, आप लोगों की प्रैक्टिस पर, आपके जब आप लोग आईटा ले लेंगे, सबसे पहली बात तो जब आप आईटा का कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे तो ईमेल के ऊपर आ जाएगा. देन देयर आर अराउंड 5 to 6 people only in आईटा who are communicating. They are also going to create a reputation in regard to you in their mind and further which would go to the industry. Then GDS के लोग जो आपके साथ कनेक्ट करेंगे, हम भी आपको कॉन्टेक्ट नंबर देते हैं, आप लोग खुद भी ले सकते हैं. ठीक है, they are also definitely, when you would communicate with them and deal with them, they would have some impression about you in their mind.
And then the airlines. When you have a GDS, then the airline is ready to communicate with you because you can leave message for airline using your GDS. When you are leaving a message, then the airline is ready to communicate with you. When they are communicating with you and they like to analyze that this person is actually having a potential, this company is having a potential, this person is going to do the right practice. You know, this is travel industry. In travel industry, there are multiple ways of doing wrong practices and right practices. Any airline or any brand would not like to keep communicating with those people who would be doing wrong practices. ठीक है, ये बात मैं हिंदी में भी बोल देता हूं, ये बात सबको बता रहा हूं मैं, आप लोग ध्यान रखिएगा. सेगमेंट ब्रेक करके 2 लाख की टिकट को 50,000 रुपए का, 60,000 रुपए का किया जा सकता होता है. ठीक है, आप 1 बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार कर लोगे. ठीक है, पर इस बात को याद रखना कि फिर जो जिनका नहीं कर सकते, जिन एयरलाइन का नहीं कर सकते, उन एयरलाइन से किसी तरह की सपोर्ट और कम्युनिकेशन की उम्मीद मत रखना. ठीक है, बाकी एयरलाइंस भी या बाकी ब्रांड्स भी आपके साथ उतना ओपनली कम्युनिकेट नहीं करना चाहेंगे. ठीक है, सो दिस इज व्हाट एवरीवन इज एनालाइजिंग. एवरीवन वुड ट्राई टू एनालाइज इट. आपकी कंपनी, ट्रैवल कंपनी के नाम के बेसिस पे वो एनालाइज करना चाहते हैं that in what kind of a work you are going to be. When you would communicate with the GDS, then on the basis of your communication, on the basis of your language, your office, they are going to analyze कि ये किस तरह के client होंगे इनके पास और किस तरह का ये काम करना चाहेंगे. ठीक है, on the basis of that you would be getting a support or not getting a support. ठीक है, कोविड आया, डाउनफॉल आया, देन बबल अप हुआ. ठीक है, बहुत सारी चीजें अलाउ की गई, अब बहुत सारी चीजें वापस कंट्रोल की जा रही. ठीक है, so following the right way would only make you successful in a long run. I hope this answers your question, right? और बताइए, और कोई सवाल किसी का? बोलो लवन्या, सवाल नहीं? सर एक डॉक्यूमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है? पेमेंट में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, गो लाइट अगर हम, वैसे तो मैंने खोल के भी रखा हुआ है और हम लोग ऑनलाइन देखकर बात करते हैं, हमारा डॉक्यूमेंट भी है इसके लिए. ठीक है, विच शोज यू द कंप्लीट प्रोसेस एंड द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एंड द अमाउंट इज इन्वॉल्व्ड इन दैट. ओके, जब आप आइटा गो लाइट अप्लाई करते हो, देन इट इज गोइंग टू बी एन एक्सपेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली $600. $600. जब आप आइटा गो स्टैंडर्ड अप्लाई करते हो, देन इट इज गोइंग टू बी एन एक्सपेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली $2,500. 4 गुना हो गया. ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस. अदर देन दैट, व्हेन वी आर गोइंग फॉर गो स्टैंडर्ड, देन you have to give a bank guarantee of approximately 8 to 12 lakhs. ठीक है, April is the month when the new session, new season starts for ITA. ITA का फाइनेंशियल ईयर मतलब हम सबके लिए ही. तो ITA के जितने भी चार्जेस हैं, जितने भी चेंजेस हैं, वो इस मंथ से स्टार्ट होते हैं. राइट, so that is why this is, जैसे कि मैंने बताया कि यूरोजोन आइटा हैज स्टार्टेड अप. मार्च में भी हमने की थी ये क्लास, मार्च में तो कहीं नहीं था. ठीक है, उसके अलावा भी देख रहे हैं. सो दिस इज व्हाट केम अप इन अप्रैल. ओके, सो आई होप इट इज क्लियर दैट यू नीड टू गिव अ पर्टिकुलर अमाउंट एज अ बैंक गारंटी. 8 से 12 लाख. क्यों एक फिक्स अमाउंट नहीं बता रहे हैं? बिकॉज द चेंजेस दे हैव हैपेंड नाउ आल्सो एंड व्हिच विल गेट टू सी. ओके, आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन. और बताइए, और कोई सवाल? सर आइटा को पेमेंट कैसे कर सकते हैं? वेरी गुड. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आइटा इज गोइंग टू गिव यू their bank account detail. Okay, there are a lot of documents which are available online, and there are many documents which we can log in and download from the ITA's portal, which may have their account detail. Don't use it. When they want payment, they would give you an account number. That would be the account number you would be. If I am giving you an account number, make a payment in that, don't do it. Right? So let the account number come directly from ITA to you and then apply, then make the payment. So when we are making an international payment, you can use a bank remit, right? If you are not able to, lot of people who are taking Go Light, जो लोग Go Light ले रहे हैं, वो बैंक पेमेंट नहीं कर पाते हैं. I know that. ठीक है, उनको ये दिक्कत आती है.
कि वो बैंक पेमेंट नहीं कर पा रहे होते हैं। तो अगर आप बैंक पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, देन द इजीएस्ट वे इज दैट आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर दीजिए। यू कैन मेक द पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड व्हेन यू आर टेकिंग गो लाइट, ठीक है। यहां तक कि आप गो स्टैंडर्ड ले रहे हो तो भी आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं, राइट। कई लोग कहेंगे कि भाई अगर 10 लाख रुपए की पेमेंट करनी है, मतलब बैंक गारंटी अगर पे करनी है तो कैसे करेंगे? बैंक गारंटी क्रेडिट कार्ड से नहीं की जा सकती। बैंक गारंटी के लिए आपको एक एफडी क्रिएट करनी होती है, एंड दैट रिमेन्स इन योर ओन अकाउंट, राइट। So they would give you the format for it. You would give it to your bank. Bank would create a bank guarantee. Money is not going anywhere. Money is in your account only. A FD has got created, and this particular FD is earning interest, and that interest is coming in your pocket. It's not going in the pocket of ITA, right? But yes, that money is blocked. I hope this answers your question, right? Whosoever asked it. और कोई सवाल किसी का? सर आइटा अगर ले लिया उसके बाद जीडीएस तो उधर से इंक्लूडेड रहेगा या उसके लिए दूसरा रजिस्टर करना पड़ता है? हाँ, मैं आइटा अप्लाई कर दिया, आइटा आ गया, उसके बाद तो जीडीएस जो होता है, जो गैलीलियो, एमेडियस, इस सब के लिए एक्स्ट्रा अप्लाई करना पड़ता है या ऑटोमेटिक उसके साथ इंक्लूडेड? पिछली क्लास में भी तो बताया था मैंने। थोड़ा हंसते रहना चाहिए इंसान को, कोई बुराई नहीं होती। तो उसके लिए मैं आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर दूंगा, आप उनको फोन करना, ठीक है, कि हाँ जी मेरे को अब आप जीडीएस दे दो, ठीक है। तो वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। ओके। कहेंगे कि अपने कंप्यूटर का टीम व्यूवर दो, ठीक है, और वो इंस्टॉल कर देंगे। अब ये नंबर क्या आपको मुझसे लेना जरूरी है? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपको गैलीलियो लेना है, then simply search Travelport, right? And on their website, there is the number. Okay. If you want to take Amadeus, then go on Google, take out the number of Amadeus and call them. If you want, me to give you number, I can definitely give you are my students. Go ahead. Anchit, go ahead. What is your question? आपने कहा कि पेमेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, तो क्रेडिट कार्ड जरूरी है कि कंपनी के नाम का ही हो? किसी के मर्जी नाम पर हो, किसी अपने दोस्त के क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, किसी भी कार्ड के क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है कि मैंने स्टैंडर्ड ले लिया, ठीक है। इफ आई हैव टेकन आइटा, गो लाइट, गो स्टैंडर्ड, गो ग्लोबल, व्हाटसोएवर, राइट, व्हाटएवर आई हैव टेकन, नाउ आई एम द ओनर ऑफ इट फॉर एंटायर लाइफ। You can say entire life that you were ITA recognized for 1 year, ठीक है। So after 1 year you have to renew it, तो आपको ये रिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितनी अजीब बात है कि गो लाइट के अंदर भी रिन्यूअल चार्ज इज $200 एंड इन गो स्टैंडर्ड ऑल्सो द रिन्यूअल चार्ज इज $200, ठीक है। तो वो आपको हर साल देना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है? आई होप दिस आंसर योर क्वेश्चन। और इसके अलावा कोई गलती भी नहीं करनी। If let's say there is a long agreement which everyone signs, which has small words, I am sure many of you who have already taken, they never bother to read that agreement. उन्होंने कभी वो एग्रीमेंट पढ़, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। Even if you read it, you have to accept it, but आपको पढ़ना चाहिए। ऑप्शन है या नहीं है, आप एक्सेप्ट तो कर ही रहे हो। So if you would read it, you would never do wrong practice. Okay? तो वो ये भी कह रहे हैं कि आपके साथ कोई रॉन्ग प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए है, अदरवाइज दे कैन रिफ्यूज टू रिन्यू योर आइटा इवन इफ यू आर आइटा गो ग्लोबल। इफ समवन वाज आइटा गो ग्लोबल एंड डिड अ रॉन्ग प्रैक्टिस, तो रिन्यू नहीं करेंगे, चलता हुआ आइटा बंद हो जाता है, ठीक है। ट्रैवल एजेंट कमिश्नर से ईमेल आती है और आपका आइटा बंद हो जाता है। समवन इफ मैनेजेस टू टेक the ITA on the basis of fake documents, ठीक है, जो आप फेक सर्टिफिकेट्स जो होते हैं, ठीक है, सर्टिफिकेट के साथ एंडोर्समेंट लेटर चाहिए होता है जो कि हम देते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव गॉट द एंडोर्समेंट लेटर आल्सो नाउ। अगर आप कोई एंडोर्समेंट लेटर को भी कॉपी कर ले, ठीक है, ईमेल आईडी को भी कॉपी कर ले और उसके बेसिस पे ले ले, कितने दिन चला लेगा? 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने चला लेगा, बंद हो जाएगा, पेनल्टी आएगी। तो जब बंद हो जाता है तो क्या होता है? फिर नई कंपनी, नए लोग, right? Those people who were used in the previous company,
Those names should not be used. A new company, new people and a new ITA number. जबकि ये चीजें जितनी पुरानी होंगी, आपका आईटा नंबर जितना पुराना होगा उतना ज्यादा बेनिफिट करता है. आप ये सोचो कि किसी ने 3 साल अच्छे से चला लिया, 4 साल अच्छे से चला लिया, उसके बाद उनका आईटा नंबर अगर बंद हो गया, देन ऑब्वियसली देयर 4 years आर गॉन इन वेन. 4 साल की उनकी सारी मेहनत खराब, उनका रिकॉर्ड खत्म हो गया. समझे? So this is what is very important. It's not only about money, it is about the right practice and the real profit in air ticketing. The real profit आप लोग खुद देखते हो, मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है. Why you are looking towards travel industry? Because you have seen travel agents successful. They are enjoying, they are selling tickets, they are earning money because they were able to remain in that business for more than 2 years. जब आप 2 साल 3 साल 2 साल एयर टिकटिंग कर लेंगे, आपका एक अलग ही पर्सपेक्टिव होगा. तब आपको समझ में आएगा कि रियलिटी में एयर टिकटिंग क्या है. चलो हम बताते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बताते हैं, और वो आप लोग सीख भी रहे हो, बट इन रियलिटी द रियल प्रॉफिट पीपल अंडरस्टैंड दैट. टिकट मुझसे आप 100 टिकट ले लो, ठीक है, मुझे कोई कहेगा ना कि ये टिकट मेरे को इतने की मिल रही है, ठीक है, बिना सोचे समझे अगर वो मेरे से ये उम्मीद कर रहा है कि मैं उसको सस्ती दूं, मैं बिना सोचे समझे भी 2,000 रुपए सस्ती उसको टिकट दे देता हूं, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है. अगर मैं इवन इफ आई एम सेलिंग 100 सच टिकट्स इन लॉस, देन ऑल्सो आई विल बी इन प्रॉफिट इफ आई नो हाउ टू डू द टिकटिंग राइटली. क्योंकि जब 100 टिकटें आपने बेची तो कम से कम 40 50 30 40 30% टिकट्स के अंदर कैंसिलेशंस, रिफंड्स, चेंजेस वो सब भी होंगे. दैट इज ऑल्सो अ बोनस. ठीक है, जितने भी लोग बिना आइटा लिए कर रहे हैं उसके लिए आप लोग सब तंग हो चुके होंगे जो किसी और से करते हैं. दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अर्निंग. ठीक है, जिन लोगों को ये बात मालूम ही नहीं, जो ये सोचते हैं कि नहीं सिर्फ टिकट बेचने में हमें अपना प्रॉफिट देखना है, ठीक है, दैट इज रॉन्ग. ओके, चलो जो भी है, वो भी जैसे आप करना चाहें वो आपको सोचना है, बट इन रियलिटी टिकटिंग हैज profit. That is why people are doing it. Otherwise, लोग करना ही बंद कर देते, right? Yes. Any more questions? One doubt, sir. Go standard and go light. Mein, what I've heard is there's a difference that airlines give commission sometimes, and one more difference is that issuance is not allowed in go light. So suppose middle of the year you realize that you want to shift from go light to go standard. So is it possible after paying the difference, or you would have to renew and wait next year to do this? It is very much possible that even after 2 months of taking ITA Go Light, you can switch to ITA Go Standard or ITA Go Global. Okay, so there is nothing like that you cannot switch in mid of the year. Even the charges are also taken on pro rata basis. Like when ITA is taking the charges for 1 year and you are making a change in the month of September, so the year is half of the year is already gone, they would be charging you for rest of the half the year. So the charges are pro rata and we can do that. When we start the accreditation, it does not say accreditation, it says accreditation and changes, right? So you all are going to click on the button of accreditation, travel agent accreditation, and that is accreditation and changes. So once you have taken ITA, whichever ITA you have taken, the same button you would click and you would make the change. You would switch yourself from ITA Go Light to Go Standard, or maybe from Go Standard to Go Light. Now imagine, let's say there is a particular airline which you want to sell, okay? And that particular airline is available on Go Standard and not on Go Light, right? And you takes Go Standard, you gives them bank guarantee, gives bank guarantee to ITA of let's say 10 lakh rupees, and within first 3 months you are able to sell considerable tickets of that particular airline. Now you are very well connected with the airline, you have a reputation, okay? You tells them that I would be switching to Go Light, you give me the capping because they have seen your performance. They would give you the capping. You switches to Go Light, you takes out your bank guarantee and you are selling the same air ticket, right? So we have to use our mind as the requirement is.
And It's not necessary that an expensive solution is always the right solution. and is this true that airlines gave out commissions in standard compared to Go Light? No, there is nothing like that. Something like that, no? There And is nothing like it's not possible in Go Light, only possible in standard, anything like that? There is nothing like that. And let me tell you, once you know how to use GDS, then you would not depend on commissions either. You would be able to earn better money even without getting commissions. Right. Any more questions? Sir, is it possible Sir. to, sir, is it possible to run a business somewhere else where we have registered our GST? Where we have not Registered, not raised GST, yeah, not raised GST. Suppose I have registered my GST at my home address and I want to do business somewhere else in my city. it is very much possible. There are a lot of people who are doing like that. And ITA may not even notice it. But as per the norms of Government of India, it is the wrong practice. Right? If GST department gets to know, or let's say if some taxation person or officer comes and says that, okay, you are doing your transactions here, where is the GST number for this address? Then you can be in trouble. But nowadays, nothing like this happens. Okay. Otherwise, the rule of the GST says that if your GST is at point A and you start sitting at point B, then you must have the GST for point B also. Okay. That is what the GST rule. ITA has nothing to do with ITA, you are a travel agent, right? A travel agent can pick up a computer and sit in a cafe coffee day and issue air tickets from there also, right? So that is the advantage travel agents have. They can say that, this is not my permanent office. I'm just sitting and doing it today, right? So my GST is this, and on all my receipts, I'm putting it and I'm paying my tax. That is what the reality is. So in a way, you can say that it is very much possible, and many people are doing that. But never do any wrong practices. That is what my suggestion would be. Right? I hope this answers your question. बोलिए मंसूर, क्या सवाल है आपका? सर अभी उम्रा के लिए बल्क में टिकट कैसे बुक कर सकते हैं और एयरलाइन से कांटेक्ट कैसे करें? Very good. First of all, the airline contact, the Google is there, Chat GPT is there. Tell Chat GPT to find out contact number for you. Okay. So you can find out the contact number, you can write them. When you are having a GDS, you can connect with the airline through that. Once you would be connected with the GDS salesperson can connect you with the airline. We can connect you, like we give a complete sheet of the airline contact numbers in our advanced course and so on. Okay, so one part is answered, that how are you going to connect with the airline. Now the second thing is that how are you going to do bulk booking with a particular airline. The first step would always be having an ITA number. When you would tell an airline that I want to buy tickets in bulk, they would like to give you a good rate or a rate for bulk only if you are an ITA company, or else they would not say no. They would connect you with their best agent, whom they know, who is an ITA. They would say, yes, we can do it. We would get your tickets issued from this travel agency, right? So many times the airlines also help us in issuing good number of tickets, because if I am an airline salesperson, I am not having any right. The airline would not give me a right. This is part of my contract, my appointment, that I cannot start my own travel agency. If I get a good corporate or a client or an agent who is not an ITA, right, I would tell them that, okay, I'll get your air tickets issued. Whom would I tell to issue his tickets? The agent who would regard me, the agent who would give me some profit, right? So that is what you have to understand. And about the airline, Saudi Arabia airline and so on, you can reach them very conveniently. When you are not able to connect with an airline for bulk, then you have to take an extra step. We have to get up and leave our computer. We have to walk and reach to the office of the airline and connect with them. This would still work. When you are not getting answer through email or phone calls, then get up, go and visit the office.
right? I hope this Okay, answers. sir. Thank you. Okay, very good. Then I think the questions are more or less over, and let's go on the ITAS platform. Sir, I have one question. Yes, please. Yes, please. Sir, my business is the partnership business. So this time I am planning for standard. ITA standard, I will plan that one. So newly started that one. I am not having any bank account. So right now I will open the bank account. I start the business. So this time standard with ITA people is asking auditing report. Audit Thank you. report, and that audit report you have to ask your CA that after how many months your CA would be able to give you audit report. So right now my finance is zero. I'm not started any business that, but company is registered, but I'm not doing any business last 1 year. So you would need to wait for minimum 6 months to get your audit report, Okay. right? So Yeah. that is why a lot of people who are just starting and they do not have any transactions, they can definitely go for Go Light first, right? And then they can switch to Go Standard. Okay. Okay. That Yeah. is what you can always do, right? I hope this answers your question. Yes, sir. Thank you. Anything else? सर अपने ब्लॉक टिकट लेते हैं तो उसमें बहुत से एजेंट बोलते हैं आप 50% पेमेंट करो वरना फिर पीएनआर उड़ जाएगा, उड़ गया ऐसा बोलते हैं, तो क्या करना चाहिए? पेमेंट करनी चाहिए। पेमेंट का देखो, बिजनेस का पहला रूल क्या है? सबसे पहले पैसा, बाद में बातें। ये बिजनेस का पहला रूल है। जहां पर बिजनेस के अंदर लोग पैसे की बात नहीं कर रहे हैं ना, जो पैसा नहीं देना चाहते, तो वो सबसे खराब क्लाइंट होता है। ठीक है। ये मैं आपको बिजनेस का रूल बता रहा हूं, ठीक है। एवरी बिजनेस पर्सन नोज, रिस्पेक्टिव ऑफ दैट पर्सन डिड MBA और नॉट, if the money is not coming, then there is no business, right? Even if the business is happening with your own relative, right? Now you have to understand that the person who is asking you for the advance, irrespective of it is 50% or 20%, is that person giving you a guarantee of a particular fare that he would hold it and giving you a time limit? Ask them for a particular time limit that, okay, if I give you 50%, then give me 30 days that the fare would remain same and it will not increase. Second thing, you must ask if you would change your words or if you would change the airline or something like that, then I must have all the rights to get my money back without any cancellation. Okay. If this is something you can make sure, then you can make the payment. Your question is very broad. आपका क्वेश्चन मालूम क्या है कि मैं किसी को पैसे दे दूं या ना दे दूं, तो मैं ये नहीं कह, मुझे नहीं मालूम वो जो ले रहा है वो ठीक ले रहा है गलत ले रहा है। उसका सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपना आइटा लो, अपने आप को टिकट होल्ड करो। व्हेन यू आर होल्डिंग एयर टिकट ऑन योर आइटा नंबर, then you are not making any payment to any airline. You are able to do that on the basis of your knowledge. Maybe you are able to hold it only for 24 hours. You can reinstate it. You can hold it for another 72 hours, reinstate it again, hold it for 72 hours. That is what the agents are going to do. Why they want to create scarcity? Because they want to close the deal. Only then your questions would end. Otherwise, this cycle of questions and convincing and explaining would be endless. That would never end, right? So we never know what situation and what agent and what air ticket is that. But actually, a client must be firm that, okay, I am going to buy because I have to buy. Once you have understood, then only you must reach to a level where a person is asking for the payment. If you have reached to a level where the person is asking for the payment, if you are doing a business, you have to make the payment. There is no other alternative. I hope this answers your question, right? MBA में आपको ये पढ़ाया जाएगा अच्छी तरह से। 3 महीने पेमेंट्स हम भी पढ़ाते हैं, ठीक है। When we are teaching this travel and tourism management, then payments, cancellation, advance. In airline, advance and cancellation is a topic of minimum 4 to 5 classes, right? Actually, what is the cancellation amount and how much advance should be given? That is a topic which takes a lot of time. I hope this is enough for today. Anything else anyone like to ask?
सही है, तो मैं आप लोगों को प्लेटफॉर्म पर ले जाता हूँ। ठीक है, अभी 1 घंटा होने वाला है, तो क्या कहते हैं, अगर ये हम आपके सारे सवालों के जवाब मैं अगर जल्दी दे दूंगा तो हम इसे जल्दी भी खत्म कर सकते हैं, ताकि जिनका एग्जाम है वो एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है, सो लेट मी टेक यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ आईटा, where you all can go very conveniently on your own also. I have kept myself logged in. Maybe I'm logged out by now, but let's see. I will take the advantage of promoting a book of the tourism school, which you all can purchase from Amazon. Already did. Practical air ticketing, a travel agent handbook. Very, very cheap. Very cheap it is. No doubt it is very cheap because I know the trainer. Yeah, Sir, I just ordered. I'm sure, I'm sure. You know, I thought let me take an advantage as an air ticketing, air travel agent. The students who are doing an advanced course in the institute, they'll get it complimentary. They should not waste money. It's not Maybe about money at all. Okay. Okay. So this is the ITA platform, right? Why I kept it open? Because it is important to see it well in advance that there is no limitation they have put on the account, right? When we create a login, you all know how to create a login, right? And then we reaches to this particular part. Till you have not reached to this particular part, you don't know you are able to complete the application or not. Okay, right now I'll just log out and I'll show you from the beginning so that you are able to understand it. Even when I am doing all this, if someone would like to have any question, can definitely ask. So you have a login, right? Where you have to go for logging in. Let me show you that also. So if you go just on ita.org, which is the official platform, then we go to these services, then we go to travel agency program, travel agent accreditation. Okay, you click here, then they ask you to fill a small form. Okay, here also they are giving you some detail. Like you can see Go Light, Go Standard, Go Global, and Go Eurozone. Okay, so this is a new thing, right? Apply for the accreditation. Okay, so when you apply for the accreditation, click on that, then they want you to fill this particular form, and then they take you on the customer portal of ITA, which is a different link. Okay, right now we are not filling it up. So what we'll do is we'll just simply put on Google customer portal ITA or ITA customer portal. So you comes on this particular part and you create your login. Okay. So if you have not logged in, you register yourself because we are already logged in. So it is just logging here, showing us that, okay, you are there. Okay. So once we are logged in, then this is the button we were talking about, accreditation and changes, right? So even if you have accreditation, you want to make a change, then also you have to come here only. So we'll click on that. Obviously, it's a little slow, so you have to be patient. Now, please understand, apply for a new head entity. When we apply for it, it creates a case number. Okay, like you can see here, which I did it today. Today is 15th of March, April, sorry. So this is the case number they have created. So I can click on that. Okay, otherwise you would click on it. Okay, you can create multiple cases also. Any communication ITA would do with you will come here. This is your inbox. Okay, so right now, because I want to continue what I started, I click on this case number. Right. So when you click on that, very transparently, they are telling you
what all documents are required, कि हमारे को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं. एप्लीकेशन गाइड आप लोगों को खोल लेनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, काफी बड़ी गाइड है. ठीक है, लेट मी ओपन इट. Let it get open. So this is all of you should read. Then they're telling you the documents required. Okay, like someone said that I am LLP. Okay, so notarized certificate of incorporation, registered limited liability agreement, CA letter confirming the partnership, valid passport or photo ID card, signed application summary. Right. So this is what they're asking. If someone is proprietor, valid passport, ID card of sole proprietor. Right. That is it. Okay. These are the trade registration which they accept. Okay, which we all know very well. And this is proof of GST is required in every case. Okay. Personal certificates too. Still, it is not updated on that side that single person can go with one. Okay. Bank beneficiary form. This is the new form which they have added, which we did in last and second last class also. It's very simple. If you would say, I'll show you how to fill it. Financial statement, not more than 12 months. Financial statement, not more than 12 months, not 12 months, not more than. So it can be 6 months, it can be 3 months. Okay. Financial guarantee, not required in every case. Okay. Travel agent handbook and so on. So we'll simply do next. Now, because I keep doing this, that is why there is this red line is coming that you started it and you didn't complete it and so on, right? So now this is what we have to fill. This is where most of the new agents, they make mistake when they are doing it for the first time. So legal name, trade name, contact number. Okay, so that is what we fill up. Service tax number, will put the GST number here. Okay, so service tax number, you would be putting the GST number here. Okay, yes. आज GST लिए आपने आज डाल सकते हो. ठीक है, they are not saying that your GST or company should be old. Okay, when we are specifically applying for ITA Gold Light, they have nothing to do with that. Okay. So here they are asking that what kind of a company you are. So here we choose, there is some error for sure. Here we choose that we are cooperative, private limited, sole proprietorship or whatsoever. Okay. So this is where you can choose. Let me choose limited partnership. Okay. And then they are asking for the address. The company name, sorry. So here we have used the company name Maya Travel. Now this is where they are saying that who is going to access this form. Okay, this is again a part where a lot of people make mistake. So if you want someone else also to be accessing it, you can add one more person. Okay, we can, here you can see there is add person is there. Yeah, I don't know why it is not going. So we can add, we can add one more person if we want. Okay. If we don't want, it is perfectly fine. We put the detail and this you have to click. Okay. This also we have to click the portal admin. Okay. And then we have to click this edit icon and then another form opens up. Okay. And we fill up that form also. So a lot of people, they make mistake here. So this is where you have to click and then you click partner, director, authorized signatory and assessment contact, all is you. Okay. This is where we'll put the salutation, Mr. Okay. And we put the address and so on.
country, India. Financial interest, so we put 100. Time given to business 100. Date joint agency, your question that how old. So I am saying I joined the agency on 15th only, today. Okay. And how many travel agency previously you worked? So if you want to say, mention the name of all the companies, you can do that, or you can say simply no. And we submit this part. So this is complete. Now, this is all done. Would you like card form of payment to be enabled for your agency? Okay. This is another most confusing part for many people. Let me explain you this. Usually we do it no, and we go ahead. Now, what do we mean by that? Please understand, you cannot say it no if you are going to make an online travel agency where people would go on the site and they would make the payment by the cards. Then you cannot say it no. But many who are going for the ITA recognition, their such website is not even operational. Okay. So if we say no, it is perfectly fine. And your client says, I want to make the payment by the credit card. Using your machine, you can take the payment from the credit card. Right? If we say yes, if we are saying that we are going to take the payment from the credit card, then we must have a certificate of PCI DSS, okay, which ensures that any online payment is secure. So that is something is required only when you have online payments. So for the online payments, you need to take a payment gateway. So the payment gateway can provide you this PCI DSS complimentary. Okay, it is not something which is mandatory. Okay, if we just want to go ahead कि हमको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं लेनी बोल देते हैं, तो हमारे लिए ये बात वहीं की वहीं खत्म हो जाती है. फिर भी हम अपनी मशीन पर या दूसरे तरीकों से क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेते रहते हैं. अदरवाइज आप यस करेंगे तो आपको पीसीआई डीएसएस सर्टिफिकेशन लेना होगा. वो कोई भी बैंक दे सकता है, कोई भी पेमेंट गेटवे कंपनी दे सकती है जो इंश्योर करेगी कि आपकी साइट के ऊपर पेमेंट सिक्योर है. So that is what actually is required when we are doing the payments through our site, right? So right now I'm saying no to it. Okay. Now they are asking about the company when it is started. So we are saying 14th. License number, we put the GST number. If we do not have any other number, we simply put GST number. Okay. Date license was issued 15th. Today's date. Why I'm putting? Because someone said if it has to be new or old. Okay. Trade registration number, again same. Is your agency an ITA recognized cargo agent? We are not. We are applying for it. No. When you are making the changes, when you are going from Go Light to Go Standard, then you would say yes and you would make the changes. Okay. Date of registration was granted. Same. Is your agency an I-10 which is in USA? So if it is, you can say yes. Otherwise, we simply say no. And these are the GDS, okay, which travel agents can use. You want to say you would be using all, you can choose all. You want to say no, I will be using only Sabre, or I'll be using only Galileo, or I'll be using, so you can choose only that particular also. Okay. So let me put them back and I'll just pick Amadeus and I will take, let me put Amadeus first and then I'll take Galileo, right? So I'm saying I will be using these two. It makes no difference. You have to take at least one, but even if you put all there that you will be using all the system, it will not make any difference on your particular application. Okay. Currency you want to use US dollar or you want to change it into INR, you can do that. Usually we keep it US dollar because everything is actually going to happen in US dollar.
and they're asking that how much you would be spending in your first year, how much would be the turnover. You all know that a single ticket is going to cost nothing less than international tickets, $500, $600. So even if we are thinking of 12 tickets, we can simply say 7,000 US dollars. Okay. And your second 20%, so we can say 9,000 US dollars. This is safe. Okay. If you would not be able to do it, it is not going to affect you much. Okay. So next. Sir, one question was left at India's NDC transactions with the airlines. NDC transactions also we can do. Right now it is by default no or yes. You just let it remain that. Obviously, we are saying that we would be doing NDC also. Okay. Which means that we would be doing directly transactions also with the airline, and which is perfectly fine. Okay. So now right now we can see there is an error. So we have no option but to log out and log in. See. Any question? Actually, it is not letting me put any number here. I want to put the number, but it is not taking it. So सर ट्रेड तो किसी भी नाम से कर सकते हैं ना, कोई ऐसा स्पेसिफिक तो नहीं है। हाँ, किसी भी नाम से कर सकते। Even a FFCG company can also take ITA on their own name, even if it is not a travel name. So this is the service text number. It is not letting me put here. Even if I'm trying, it is not letting me put here. So what I'm going to do is I'll go here and I'll check if I'm getting this option to be filled on the other part. There is some mismatch.
or maybe because I've done it so many times, that is why it is giving me error. This last time we will try it. Otherwise, I'm sure I have shown you the complete process. Once we submit it, then it gives us the space to upload the documents. Okay, we upload the document, we submit it, there is no money transaction involved, and then we have to wait for 2 to 3 days for their reply. तो लीगली रजिस्टर्ड नेम एंड एड्रेस माया ट्रेवल आएगा या माया आएगा खाली? The complete address must come here. The name and the address must also come here. Okay. But I have not put the address, which is fine, right? Just we are just completing the formality. So you have to actually put the address also here. तो address भी हमारे को यहाँ पर लिखना होता है. लीगली रजिस्टर्ड नेम माया है, जैसे ऊपर माया है लिखा हुआ आपके फॉर्म में. कहाँ पर? यहाँ पर ये तो मेरा नाम है ना. ये मैंने अपना नाम बताया कि मेरा नाम माया है. लीगल नेम मतलब कि मेरा नाम क्या है. ठीक है. दिस इज द ट्रेड नेम. So it is done. Whatever error it had, maybe they know that minimum this number of numbers are there in the registration number. That is why it was not taking. So I increased the digits and it has taken it, right? Now we have to upload the documents which these, as per our company. If we have said we are LLP, then we have to upload the documents of LLP. Okay. If we say that we are just a proprietorship, we have to upload the documents of proprietorship. Okay. So this is where we would put the proof of the company formation, which can be GST for proprietorships. For others, it is going to be their company formation proof registration like private limited and LLP. Again, we will put GST registration here. Trade registration, again, you can put your GST if you are a proprietorship or otherwise trade registration form. Okay. This is where we are going to put both the certificates. Okay. The certificate which are required to apply for the ITA, you would put it here. Okay. Otherwise, a refresher course is required. You can download a sample of the endorsement letter. We provide endorsement letter. Don't worry about it. Okay. And we don't charge anything for that. Bank beneficiary form. Okay. This is again we fill and we submit it. Financial statements.
This is mandatory in case of our all the applications now, okay, which should not be more than 12 months. So that is what we are going to put here. Once that is uploaded, we next it, right? Once you have next it means it is complete. Then you have to wait for 2 to 3 days, and the reply will come. The reply will come on your email also, and the reply will come here also. You can go on your case, it will show progress, and it will show you the remark, right? So this is how it happens. I hope it is clear to everyone. Any questions? इसमें ट्रेड रजिस्ट्रेशन में जीएसटी दोबारा अपलोड कर सकते हैं ना? जब आपका प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है, तो ट्रेड रजिस्ट्रेशन हम सिर्फ जीएसटी को देखो। पहली बात तो ये अंचित ने सवाल पूछा था कि भाई मेरे पास सिर्फ जीएसटी है। अगर किसी के पास सिर्फ जीएसटी है तो वो दोनों जगह जीएसटी कर देगा। अदरवाइज कोई समझदार होगा तो वो ट्रेड रजिस्ट्रेशन भी तो करेगा। ट्रेड रजिस्ट्रेशन फ्री में होता है। ट्रेड रजिस्ट्रेशन हम शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट कर सकते हैं, हम उद्योग आधार कर सकते हैं, so that we upload it. But if someone is not having, then both the places GST, right? When we register LLP or LLC, then we have that registration, right? And we upload that. Okay. सर ट्रेड रजिस्ट्रेशन मतलब एमएसएमई का जो होता है उद्योग वाला, That is also for proprietorships. That is also a trade registration. You can use that. Yes, please. ट्रेड रजिस्ट्रेशन वही ना सर, क्या? उद्यम IMS। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई ट्रेड रजिस्ट्रेशन जो सिंबल होता है उसको भी रजिस्ट्रेशन करना होता है? समझा नहीं मैं आपका सवाल, फिर से पूछना। जैसे सिंबल होता है, कोई माया ट्रैवल्स आपने बोला, तो ट्रैवल्स का लोगो होता है, कोई यूज ना कर सके उसके लिए वो भी ट्रेड करना होता है? ट्रेडमार्क की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ट्रेडमार्क आपको शुरू से लेने की इतनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वो अपने शौक में लोग लेते हैं कि हम ट्रेडमार्क भी करवा लें, ये भी करवा लें। वो आप करना चाहें कर सकते हैं, but trademark is not required here. That is called trademark registration. That is not required. I hope this answers your question. कोई सवाल किसी का? हाँ, जिसमें भी देखो सिर्फ प्रोप्राइटरशिप और वन पर्सन कंपनी ओपीसी जिसे कहा जाता है, यही दो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन है जिसमें सिंगल पर्सन कैन रन अ बिजनेस। बाकी जितनी भी है उसमें दो लोग होते ही होते हैं, कम से कम दो लोग होते ही होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर आपको दो लोगों के सर्टिफिकेट लगाने, दो लोगों को एग्जाम देना पड़ेगा, दो लोगों को सर्टिफिकेट मिलेंगे और लगाएंगे, अपना एंजॉय करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सिंगल को एक ही, देखो सर्टिफिकेट एक ही चाहिए, समझिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है। सर्टिफिकेट एक ही चाहिए। आईटा कह रहा है मेरे को आप टिकटिंग का सर्टिफिकेट दीजिए, ठीक है। कोई भी जीडीएस आपको टिकटिंग का सर्टिफिकेट बिना जीडीएस बेसिक का दिए नहीं दे सकता, अलाउड ही नहीं है। भाई जीडीएस का बेसिक आपको आता नहीं है, हम आपको टिकटिंग का सर्टिफिकेट कैसे देते? इसीलिए पहले जीडीएस का एग्जाम क्लियर किया जाता है, बाद में टिकटिंग का एग्जाम क्लियर किया जाता है। आज जो एग्जाम हो रहा है 3 बजे वो बेसिक का है, फिर 22 तारीख को जो एग्जाम है वो टिकटिंग का है, ठीक है। तो दोनों के दोनों एग्जाम का, इसीलिए हम कहते हैं कि 4 सर्टिफिकेट। आईटा मांग रहा है 2 सर्टिफिकेट। भाई पहले जीडीएस बेसिक लिया आपने, तभी तो टिकटिंग वाला मिला, ठीक है। रियलिटी में अपलोड 2 ही करने, 4 नहीं करने, ठीक है। बट टिकटिंग का सर्टिफिकेट लेने के लिए आपके पास जीडीएस का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, नहीं तो हम आपको हम क्या कोई भी नहीं दे सकते, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। Clear? Sir, I got one question. Yes, please. I already have an export-import company. Very good. In that company, I can register for the ITA, right? Yes, you can. Why not? And I have a partner too. Does the partner have to take the course, or my course will be enough? Is it a partnership firm or it is a proprietorship firm? It's a partnership firm. Then 2 people, your partner would also need to have a certification. Okay, thank you, sir. Any more questions? Abraham, any question? You are not audible.
You're not audible to us. You can text here, you can chat here. You know, there is a space you can leave your question there. I'll answer it. Any more questions anyone would like to have? If there is anything which I said in Hindi and someone was not able to understand, please ask. I'll say that in English. If there is something which I said only in English and someone want me to repeat it in Hindi, then please do not hesitate. हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी में किसी को भी सुनने की इच्छा हो तो जरूर बोले. मैं हिंदी में दोबारा बोलने में कोई परेशानी नहीं है, मैं हिंदी में भी बात कर सकता हूँ. कोई लवन्या, कोई सवाल नहीं है? Sir, any air ticket tax related information? Air ticket related information. Tax paying, no? Tax paying. The Yeah. taxation on the tickets. Right? Very good Yeah. question. Okay. This is something we include in our further classes, in the advanced classes. But let me give you a very good understanding about the taxes on your ticket. Okay. Let's say you have purchased a ticket, you have sold you a ticket costing you 2 lakh rupees. Okay. And you are selling it in the same price to someone in 2 lakh rupees. You are not liable to pay any tax. Okay. If someone is thinking that I have purchased a ticket in 2 lakh and I have sold it in 2 lakh, then I have to put 18% on 2 lakh, then there is nothing like that. Okay. Now, let's say a ticket which is costing you 2 lakh and you are selling in 2 lakh 10,000 rupees. 10,000 is your profit. On this 10,000, you are required to charge 18% tax. Okay. So usually what agents would do, agents would not show the tax amount. If they would show 1,800 rupees as a tax amount, then the client would get to know very, very clearly that there is a profit agent has made of 10,000 rupees. Okay, which is actually should not be a hurdle for anyone. A travel agent or an agent who has the right way of doing the work should say that this is what I have, my profit, I have to charge you. Right? Let's not get into that. So what people would do, they would simply say this ticket is costing me 10 lakh 10,000 rupees and I'm giving you because I'll be getting some commission. So they don't even show the tax part at all. And in their back office for their own personal taxation, that is where they pay the GST wherever the profit is. So usually they don't pay GST on the basis of each ticket. They pay GST on the basis of overall profit. Right? So this is how the taxation happens, which is very, very simple. In case people who have go standard or go global, this taxation and invoicing is very easily done by BSP. The biggest feature of Go Standard and Go Global is banking settlement plan. So that makes the life very easy because then invoicing, taxation becomes far, far easy. And we can even hold the remit amount, right? Like when we have Go Light, first you would make the payment and then you would issue the ticket. In case of Go Standard, Go Global, you are not making the payment, you have issued the ticket. And now when the payment is about to go, you want to hold it, you can hold that amount. That feature is also there in Go Standard and Go Global, and which is not there in Go, what we call it, Go Light, but I hope it would be there in Go Eurozone, right? Any more questions? I hope this answered your question. Anything else anyone would like to ask? Then I would like to say thanks a lot to all of you for joining the class. I hope you learned a lot, right? And please do apply, do give your exam diligently. You will be able to pass because you people have done so much of hard work. And wherever you are stuck when you are applying for the ITA, find us available. You have a dedicated person, Miss Ritu, the admin head for the tourism school. She is an expert of ITA. She has been given a lot of training for it. So you just have to ask her, she'll be able to answer your questions over the chat, which is having a very number you all are connected, 9899777448. Yes, someone was saying something. So something travel B2B travel portals, that one. Can you give me some idea that?
Why not? Why not? I can definitely give you some detail about it. See, anyone who is not interested in taking ITA, okay, and want to sell air tickets, right? You want to have the control in your hand. You don't want to call someone that please issue a ticket or tell me the fare. Then this B2B systems comes handy. What are these systems? What are the companies which are providing these systems? So, you know, Akbar. Akbar is having a B2B platform. Anyone can take it. Anyone can take it. Now, please understand, this is not a good thing. This is a bad thing for travel agents. Anyone can take it. So, a lot of end users who are actually not travel agents, they also have. If I am a traveler, if I am someone who has 4 or 5 children, parents, servants, and I have to take one trip every year, I will take the system. I will issue my tickets on my own, right? So Akbar, Ria, Travel Boutique Online, these are the platforms which are used by thousands of people, okay? And we can issue the air tickets out of that. All of they are ITA recognized. Right? Why are they able to issue the tickets? Because they are ITA recognized. You are not ITA recognized, so you are taking their help and you can use their portal and you can issue the ticket. The challenge is that when you need to make changes, let's say you want to change the name, you want to change the date, you want to change the itinerary, you want to change the fare, you want to change the routing. So such features are not available. Anyone who is just going to book few tickets, for them, this is the right way. Go ahead, take B2B and start buying and selling air tickets. If someone want to go professional, then obviously you would need to go for ITA. I hope this is what explains what you wanted to understand. Any more questions? Okay, if the questions are answered, then thank you. Yes, any question? Any more questions from anyone's side? Okay, fine. Thank you. Take care.